what makes it interesting is not just the track of Murder Kisne Kiya. That is one aspect. But we also see these characters on their own emotional journey. पहले होता था ना हमारे अब इंडिया में स्पेशली कि कहानी से बड़ा एक्टर होता है जो कि नहीं होना चाहिए. कोई दुनिया का एक्टर किसी कहानी से बड़ा नहीं होता. Absolutely. हमारी मर्डर इन अगोंडा का हीरो मर्डर इन अगोंडा है. उसके बाद हम सब एक्टर आते हैं. लिटरली मुझे उससे पहले ये नहीं पता था कि मीम होता क्या है. मैं मीम बोलता था पहले उसको. मुझे तो मीम नहीं पता था पहले कि मीम क्या होता है. मुझे पहली बार मीम पता तब लगा जब मेरे बने. तो मेरे लिए बहुत स्पेशल. मैं अभी तक वो फीलिंग भूला नहीं हूँ कभी भी. जब पंचायत जब आया था तो एक महीने में मेरी जिंदगी में इतना अटेंशन में पैदा हुआ वो तब मिला या फिर पंचायत के लिए. So hello and welcome. Hello Shriya. Hello Aasif. Welcome to ETimes. Hi. How are you guys doing? Very good. How are you? I'm good. It's good to see you guys. Yeah, I have a lot to talk about, but first we'll talk about the trailer that I saw. It's amazing. Let me sum it up for you, all right? I love the classic whodunit mystery. First of all, I'm in love with those genres, all right? So I saw the trailer. It's gripping, it's gritty, it's intriguing as well. So am I summing up the trailer in one, or am I leaving something ahead and you guys can add on? You're leaving. It's also funny. Okay. All right. Comedy भी हमने की है थोड़ी बहुत. All right. So tell me, what can we expect from this one? Let me know. Let's start with the simple question. आसिफ बताएगा पहले. चलो आसिफ start करो. बहुत सारी चीजें यार अलग अलग जो एक्चुअली ट्रेलर जो है वो तो मतलब वो बहुत थोड़ा सा हमने दिखाया. पीछे का जो ड्रामा है पूरा वो वाकई बहुत सारा. और इसमें सारा आपको सीरियस मटेरियल मिल रहा है. लेकिन सीरीज में आपको पता लगेगा कि इसमें क्या है. और बहुत सारी चीजें, बहुत सारा फन है. भाई बहन की बॉन्डिंग है. हमारे बीच की केमिस्ट्री है. हमारे बीच का एक अलग फन है. मैडम का फन है. सबके अलग अलग मजे चल रहे हैं. बहुत सारे फन है. कुछ लोगों के फन है तो बहुत सारा है. Yeah, he's absolutely right. And like you said, I'm also a big fan of whodunits, and I'm really proud to say that the show is one of the most intriguing, quirky whodunits that have come out from our industry. And it's a mini series, so it's a quick, fun watch. Mm-hmm. And what makes it interesting is not just the track of Murder Kisne Kiya. That is one aspect. But we also see these characters on their own emotional journey. My character, Sarla, is going through a lot in her personal life that she has suppressed. And in the course of this time that she ends up spending with her brother trying to solve this case, she comes to terms with certain realities of her life. You know, she's somebody who is exploring her sexuality, someone who's not been able to understand it. So we also have that layer in my character. And the relationship that we've shown between Sarla and Sanku, as she calls him, is so sweet. And I don't think we've seen this brother-sister duo out there trying to solve a case in Goa. All right. That's intriguing. That's intriguing as well. But when we do a classic murder mystery, like a whodunit mystery, right? Every character has some shades of grey in it, and you have to tell me as an actor, like, do you have to agree with the character, or you just do your job as an actor and you just plainly play it? How do you deal with that? I don't think you judge the characters you play. Perfect. You have to, at least I don't, if I speak for myself, that I have to try as an actor and find truth in whatever it is. And because the minute I start judging it, I'm not going to be able to portray it authentically. Mm-hmm. But I do understand, say if in any project I'm playing an absolute terrible person जो कुछ बहुत गंदा कर रहा है, फिर मैं स्क्रिप्ट में मुझे वो पे ऑफ दिखना चाहिए. वो हीरो नहीं बन सकता. You know what I'm saying? So I feel like in characters especially that I am playing, in fact, the more flawed they are, the more grey they are, the crazier they are, is more exciting. That's right. That's nice. That's good to say. Aasif, how about you? क्या आपकी क्या सोच है? क्या आपका सवाल क्या था? सॉरी. अच्छा, मेरा सवाल ये था कि जब भी हम एक क्लासिक मर्डर मिस्ट्री देखते हैं, जैसे whodunit मिस्ट्रीज होती है, काफी कैरेक्टर्स जो होते हैं उसमें शेड्स ऑफ ग्रे होते हैं, काफी चीजें होती है जो हम पर्टिकुलरली उससे अग्री ना करें. बट एज एन एक्टर, do you have to like believe in those characters and agree with the character to portray it, or you just plainly do your job as an actor? No, of course. मेरे लिए ये है कि मैं जो भी मैं पर्सनल लाइफ में एक्टर का मुझे लगता है कि कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होना चाहिए.
एक्टर को पानी की तरह होना चाहिए कि जिस भी बर्तन में उसको डालेंगे वो शेप ले लेगा वो। Be like, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर एक कैरेक्टर कर रहा हूँ जिसमें मैं गैंगस्टर हूँ, तो मुझे वो सोच रखनी पड़ेगी अभी मैं उसका एकदम ऑपोजिट प्ले कर रहा हूँ, अभी मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, मुझे उसका स्टेट ऑफ माइंड समझना पड़ेगा कि वो किस तरीके से इसको क्राइम के तरीके से देखता है। एक क्रिमिनल का अगर मैं कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ तो वो जस्टिफाई करेगा अपने क्राइम को कि मैंने तो इसलिए किया, मैं घर में जरूरत थी, वट जो भी। तो मुझे लगता है एज एन एक्टर आपको बहुत प्लेन रहना, बहुत न्यूट्रल रहना पड़ता है हमेशा। आप कैरेक्टर की सोच के साथ चलेंगे तो आई थिंक आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम आपको कैरेक्टर बताता है कि मुझे कैसे प्ले करना है, आपको जरूरत नहीं पड़ती कैरेक्टर को प्ले करने की, तो मेरे लिए इजी हो जाता है वो प्रोसेस। बिल्कुल। एंड टू ऐड टू दैट मैं ये कहना चाहूंगी कि वो आपकी रियलिटी होती है, तब आप श्रिया और आसिफ की तरह नहीं सोच रहे होते हो। आपने वो उतना आपको सरेंडर करना पड़ता है कि कभी कभी आपके पर्सनल ओपिनियंस आ जाती है जब आप डायरेक्टर के साथ डिस्कस करते हो, वो नेचुरल है। बट देन यू हैव टू ट्राई एंड फाइंड दैट moment of convincing yourself as to why this character would do a particular thing, and that is the joy and privilege of being an actor, I think. करेक्ट। इवन तो जैसे कि ये पर्टिकुलर ये कैरेक्टर, इसकी एक डिमांड थी जो मेरे लिए थोड़ा चैलेंजिंग था कि मुझे बहुत सारी चीजें अनलर्न करनी पड़ेगी, बिकॉज एज एन इंडिविजुअल आसिफ को इतना पता है, संकेत को इतना पता है, वो नहीं समझता उसकी दुनिया, वो बहुत भोला, मैं अपनी जिंदगी में बहुत चंट हूँ, वो बहुत, तो वो मुझे बहुत सारी चीजें आपको अनलर्न करनी पड़ती है, वो ज्यादा मुश्किल होता है कि कुछ नया सीख लेना इजी, सीखा हुआ भूलना बहुत मुश्किल होता है, तो वो एक चीज थी मेरे लिए इसमें। It's not easy being an actor, that's true. Okay, हम बात करते हैं जब भी हम बचपन में होते थे, हम सबने चोर पुलिस काफी खेला हुआ है, right? And when you actually get to play it on screen, right? It's another मजा होता है, वो आपके अंदर का बच्चा निकल के आता है जब आप ये चीज पोर्ट्रे करते हो on screen. Yes, of course. ये तो बचपन वाला, मतलब हम एक्टर बने इसीलिए, क्योंकि एक टाइम पे मुझे लगता था कि मुझे डॉक्टर बनना है, फिर मुझे लगा मुझे इंजीनियर बनना है, फिर मुझे पायलट बनना था, फिर मैंने कहा अब मुझे तीनों बनना है, तो तीनों बनने के लिए फिर हम एक्टर बने, तो इसमें चोर पुलिस जितने बचपन के गेम्स है वो सारे खेल रहे हैं हम लोग। एक्चुअली बिकॉज मुझे किसी ने एक बार पूछा था दैट ग्रोइंग अप मैं स्पोर्ट्स में थी, फिर मैंने कथक किया, फिर बीच में मैं कुछ और बहुत सारे मेरे इंटरेस्ट थे, तो मुझे किसी ने पूछा ये सोशियोलॉजी सीख के, ये करके, वो करके, क्या वो चीजें वेस्ट हुई हैं? बट आई फील आवर प्रोफेशन इज सच व्हेन नथिंग गोज टू वेस्ट, बिकॉज इट इज I don't know, I feel like sometimes people assume that actors are not intelligent, or that they don't, that we're just here for the glamour or anything. No, in fact, emotional intelligence is something I rate much higher than IQ. And all these things, like Asif said, बचपन में मुझे भी लगा था एक बार कि मैं डिटेक्टिव, एक बार कुछ एस्ट्रोनॉट बनना था, एक बार डिटेक्टिव का भी मेरा एक वो फेज आया था, बिकॉज मैं डिटेक्टिव नहीं बनना था, बट रजनी पंडित जो है इंडिया की वन ऑफ द प्रोमिनेंट डिटेक्टिव्स, आई न्यू हर, so I had gone to her, spoken to her, I was so fascinated by it, so I felt कि of course life में वो नहीं हुआ, but through Sarla's character I was able to live that. Alright. That's nice. Tell me which are your favorite murder mysteries or favorite character that you liked, enjoyed watching, like growing up. Which one was that? Asif, you want to go first? आप बताओ. I have quite a few. So books में से, if I tell you, I have read a lot of Agatha Christie. Growing up, your Enid Blyton's famous 5, Secret 7, Sherlock I loved, but recently अगर मैं बताऊं तो I think Sherlock Holmes played by Benedict Cumberbatch. Oh, that's a good one. Fabulous. And I also like the film Knives Out. Very, very well done. In fact, Murder in Agonda also has that similar quirk, like this humor, this dark humor. It's not just like a serious murder mystery. And there was one more that I saw with Martin Short and Steve Martin and Selena Gomez. There's a murderer in the building. That's a good one. That's a very good watch. And I would like to tell the audience that Murder in Agonda is of a similar vibe and genre, where it's like a light-hearted, fun murder mystery. It's dark, but it's fun. It's dark and fun. Dark and fun. How about you, Asif? मैं एक्चुअली, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं बहुत ज्यादा मर्डर मिस्ट्री का कभी फैन इतना बड़ा रहा नहीं, क्योंकि मैं बहुत पोएटिक इंसान हूँ अपनी लाइफ में, और हाँ, मुझे लिटरली मुझे पोएट्री लिखना, पढ़ना, सुनना, हमेशा से ये चीजों में मैं ज्यादा रहा हूँ, बहुत खून खराबा मुझसे देखा नहीं जाता तो मैंने बहुत ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया है,
तो मेरे लिए एक्चुअली वो ज्यादा इंटरेस्टिंग इसीलिए था कि मैंने वैसे कभी एक्सप्लोर नहीं किया, मैं सीधा कर रहा हूँ उसको, तो ज्यादा मजेदार है मेरे लिए कि मैं अगर पहले से अगर बहुत ज्यादा देखूंगा तो कहीं ना कहीं दिमाग में रेफरेंसेस अटक जाते हैं, तो मेरे लिए ज्यादा फ्रेश था ये पूरा वर्ल्ड। All right, that's true. But this show is also coming on an OTT platform, right? And OTT, like we all used to say, it's a boon for us. It's been exploring so many actors. We're getting so many new talent to see. We see collaborations that can never happen if it was just a big screen, like Shriya and Aasif coming together. It's such a boon to see you guys together, working together. So I want to know how it makes you feel to see this ride of like wave of cinema that's been happening in the industry and getting so much what you can say is like viewership or audience love for this platform. How do you see this platform as a whole? See, the good thing is that because of the OTT medium, there is just more work for everybody. There is more work for actors, for cinematographers, for other technicians, for production teams, and then eventually even for the media, right? So everybody has benefited. Of course, the sheer amount of content is also there. There is so much to watch. So eventually it does come down to the quality of it, because not everything is going to rise up and get the audience attention. Everyone is fighting for attention now, right? To be seen in terms of content. So personally for me, I feel like many more interesting stories are being told now, which were never explored earlier. The kind of characters that are written for women, inclusive stories, just the kind of storytelling, the freedom to tell certain kind of stories is there now, which perhaps wasn't there earlier. And I think that is the biggest boon, I would say. All right. How about you, Aasif? ऑफ कोर्स ये जो श्रेया ने कहा कि जो नया थर्ड जो प्लेटफॉर्म आया, जो नया मीडियम आया ओटीटी, उसके आने से बहुत सारी चीजें बदल गई। उससे सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या हुई ना कि पहले ऐसा होता था कि जब हम फिल्में देखते थे तो आपके पास 2 घंटे होते थे। अब 2 घंटे में क्योंकि आप एक कहानी बना रहे हो तो उसमें ऑफकोर्स 3 लोग सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं, हीरो, हीरोइन एंड विलन। इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं जो उस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। वो कौन लोग होते हैं, कोई पहले उनके बारे में सोचता नहीं था। काफी टाइम अभी ओवरशैडो भी हो जाते हैं। अभी क्योंकि सीरीज का फॉर्मेट आ गया, अभी आपके पास 2 घंटे की जगह आपके पास 8 घंटे। 8 घंटे आप 3 लोगों को नहीं दिखा सकते, बोरिंग हो जाएगा। अभी हर एक कैरेक्टर को बहुत ही डिटेलिंग के साथ, बहुत ही आपके पास, आपको सेंसरशिप का आपको दिमाग में नहीं होता कि मैं ये करूंगा ये नहीं करूंगा, वो सारी चीजें। तो प्योर जो आर्ट होता है वो आर्ट आई थिंक बहुत फिल्टर होकर बाहर आ रहा है। तो वो आई थिंक सबसे बेस्ट तरीके की चीज है। उसके अलावा एक जो बहुत अच्छी चीज हुई है कि इंडिया में स्पेशली ऑडियंस बहुत ज्यादा अभी समझदार हो गई है कि ये भी कंटेंट हमारी कंट्री में बनने लगा है। अब तो ये ऐसा है ना कि आप अब ऑडियंस को पता है कि दाल चावल क्या और बिरयानी क्या है। अब आप उनको दाल चावल बोल के बिरयानी और ऐसा नहीं कर सकते वहाँ, तो आपको अच्छा बनाना ही पड़ेगा। तो उससे ऑडियंस के अवेयरनेस से अभी लोग जो फिल्म मेकर थे वो और ज्यादा टाइट हो गए कि हमें अच्छा बनाना पड़ेगा। तो वो बेस्ट चीज है। Actually, just to add to what Asif said, I think initially people had a very standard way of looking at things. Hero, heroine, villain, उसी में वो खेल था। इनफैक्ट तभी भी जब एक्टर्स, उनके एस्पिरेशंस भी वैसे होते थे। और ना तभी जब हम कैरेक्टर एक्टर की बात करते थे ना, somewhere it was like looking down upon it कि अच्छा कैरेक्टर एक्टर। But today everybody is a character. Today the lines of what stardom is blurring. People who do 2 scenes in a show, if they do it well, will get noticed. Yes. Need to get that love. The audience has the access to write to them, to tell them, and that is a very encouraging thing for an actor. And if you see today, we're seeing a lot of your big stars coming in and doing work on OTT as well. And if you see, I have observed that the spirit of working with everybody, it's not I am up and you're down, वो वाली vibe ज़्यादा दिख रही नहीं है, so which is a good thing. It's a good time to be an actor today. It's a very good time to be an actor. You're right. A few things that OTT has also bridged is a language, is a collaboration between 2 actors, it's collaboration between two industries, say Bollywood, Hollywood. Everyone can work here, everyone can work together. But previously there used to be existing power structure in our industry, right? Where people couldn't find space in the industry. Do you think because of the arrivals of OTT that is diminishing right now and everyone is getting into this and getting work right now? सर इसके 2 बड़े एग्जांपल आपके सामने बैठे हैं। That's what मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ। मतलब ऑफ कोर्स ओटीटी के आने के बाद जो श्रेया ने कहा कि अभी अगर आप कोई एक कैरेक्टर जिसके सिर्फ 2 सीन्स है,
किसी भी पर्टिकुलर चीज में, जो 8 घंटे की सीरीज है, अगर वो बहुत अच्छे हैं तो उस एक्टर को आगे चल के उसके लिए सारे रास्ते खुल जाते हैं। और वो ओटीटी के आने के बाद ही हुआ, ऐसा नहीं वो फिल्मों में भी होता होगा, बट वो 100 में से किसी एक के साथ होता था, अभी 100 में से 50 के साथ होने लगा है। इफ यू आर गुड, आपको चांस मिलेगा ही मिलेगा। और उसके अलावा सबसे बड़ी चीज है कि अभी क्योंकि ऑडियंस, जैसा मैंने कहा कि ऑडियंस बहुत ज्यादा अवेयर हो गई चीजों को लेके, ऑडियंस ऑफकोर्स जो प्रोडक्ट मार्केट में बिकेगा वो ज्यादा बनेगा। तो उसकी वजह से ये हुआ कि जो बड़े बड़े जो प्रोड्यूसर्स है उनमें यकीन पैदा हो गया कि अभी हमको स्टार की जरूरत नहीं, हम एक्टर्स को लेके कुछ बनाते और अच्छा कुछ बनाते। हमारी हमारी जो भी सीरीज है, जो भी फिल्म है, उसका हीरो की कहानी होना चाहिए। वो सबसे खूबसूरत चीज, सबसे अच्छी चीज हुई है। पहले ही होता था ना हमारे अब इंडिया में स्पेशली कि कहानी से बड़ा एक्टर होता है, जो कि नहीं होना चाहिए। कोई दुनिया का एक्टर किसी कहानी से बड़ा नहीं होता। Absolutely. वो अभी एक अच्छी चीज होने लगी है। Yeah, totally. लाइक हमारी 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 मर्डर इन अगोंडा का हीरो मर्डर इन अगोंडा है। उसके बाद हम सब एक्टर आते हैं। So rightly put. Shriya, you have anything to add? Absolutely what he said. In fact, because like Asif said, the audience is more aware and that you can't just give them anything. We have really finally learned to respect our writers. Correct. And the importance of writing and knowing that that is what the Holy Bible is that. And if you notice, even when you have people coming up to you, if they like a show, they will also comment on the storyline. They will also talk about the plot because they're just exposed to so much. So I feel like even though our show, for example, is a mini series, it's on Amazon Mini TV, which is sort of upcoming, and it's available on your phone to watch. Nowhere have we compromised on the quality in any way, because you have to be there right at par with everything that's being made. आसिफ, पंचायत के 2 साल कंप्लीट हो गए और आपका वो स्मॉल छोटा सा कैमियो, तुम्हें पता है वो कोई नहीं भूल सकता, सबको यादगार कैमियो रहा है, राइट? और 2 साल कंप्लीट हो गए देखा जाए तो। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द शो हम हमेशा एक कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं जो हमारे दिल के काफी करीब होता है, तो हम चाहते हैं कि आप कुछ बताइए उस पर्टिकुलर कैरेक्टर के बारे में, वो आपका फूट के रोना, वो सडन आउटबर्स्ट, आज तक वो ऑडियंस के दिलो दिमाग में है। तो मैं 2 साल कंप्लीट हुए आप उस चीज को, क्या कहना है आपको उसके बारे में? एक तो ये होता है ना कि कोई भी जो चीज जो बहुत ज्यादा वायरल होती है, लोगों को लगता है कि यार क्या बनाया आप लोगों ने, वाह क्या किया है आपने। ऐसा कभी नहीं होता। अगर कोई इंसान अगर सोच के हिट फिल्म बनाने लगता है तो उसकी हर फिल्म हिट होती थी। तो मैं तो एक्चुअली उस टाइम पाताल लोक मिर्जापुर ये सब शूट कर रहा था, बहुत ही डार्क वर्ल्ड में था उस टाइम, स्पेशली हमारा पाताल लोक का शूट चल रहा था। उसके बीच में मुझे एक कैरेक्टर मिला, मैंने फर्स्ट में कहा मुझे पता नहीं करना है नहीं करना है, 2 ही दिन का शूट है। फिर क्योंकि डायरेक्टर मेरे दोस्त था, मैंने कहा चलो करते हैं जाके। और वो बहुत ही नॉर्मली तरीके से हमने शूट किया था, कुछ ऑफकोर्स उसने इम्प्रोवाइज किया, वो ये एंड वाला व्हाटएवर जो भी, वो सारा इम्प्रोवाइज किया करके मैं आ गया, भूल गया सब कुछ। फिर लॉकडाउन लग गया और आई थिंक लॉकडाउन लगने के 15-20 दिन बाद ही वो रिलीज हुआ था। और वो मुझे उससे पहले लिटरली मुझे उससे पहले ये नहीं पता था कि मीम होता क्या है। मैं मीम बोलता था पहले उसको, मुझे तो मीम नहीं पता था पहले कि मीम क्या होता है। मुझे पहली बार मीम पता तब लगा जब मेरे बने। तो मेरे लिए बहुत स्पेशल, मैं अभी तक वो फीलिंग भूला नहीं हूँ कभी भी, क्योंकि जब पंचायत जब आया था तो 1 महीने में मेरी जिंदगी में इतना अटेंशन में पैदा हुआ, वो तब मिला, या फिर पंचायत के लिए मिला। 2 बार। That's the power of cinema, right? That's the power of OTT right now. So let's sum it up with that. And best of luck, guys. Best of luck for your series. I hope it's going to be as intriguing, gritty, and funny and dark, like Shriya said. We are looking forward to it. I hope you watch it. I hope you watch all the 5 episodes. I do that. I will. And best of luck, guys. I'll see you guys again. Thank you. Bye.